हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रेन कनेक्शंस। लास्ट वीडियोस में हमने अबैकस टूल पर और हैंड्स पर काउंटिंग करना सीखा था कि हम 1 to 100 तक काउंटिंग कैसे कर सकते हैं। एंड आज हम सीखेंगे कि हम एडिशन अबैकस टूल पर कैसे कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, now see. Suppose if we have to add 1, how will we add 1? Right, like this. हम 1 रो की एक बीट अप कर देंगे। अब अगर इसी में हमें 1 और ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे? Now we will add 1 more beat like this. So 1 plus 1 equals to 2. Right. Okay, now make it 0. Let's do some more questions. Add 1, add 2. So now our answer is 3. 1, 2, 3. Right. Next question. Add 1, add 5. Now what is the answer? Answer is 6. 5, 6. Okay. Now next question. Add 5, add 3, add 1. What is the answer? 9. Right. Next question. Add 2, add 5, add 1. So this is 8. Right. Next question. Add 3, add 1, add 5. Now the answer is 9. Excellent. Okay. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी करने के लिए, और जब आप वो क्वेश्चंस कर लेंगे और उनका आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बताऊंगी। इट मीन्स आई विल वेट फॉर 2 seconds, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगी। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। Add 2, add 5, add 2 again. Okay, now add 2, add 5, add 2. So our answer is 9. Right. और आपके जितने भी आंसर्स करेक्ट होंगे, do let me know in the comment box. Great. Now our next question is add 2, add 1, add 1 again. So the answer is, well, let's see. Add 2, add 1, add 1 again. So our answer is 4. Right. Next question. Add 5, add 1, add 1 again. Let's do it again. Add 5, add 1, add 1 again. So the answer is 7. Next question. Add 6, add 2, add 1. What is your answer? Come on, fast, write down in the comment box. Okay, I hope आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। मैं अब आपको सारे क्वेश्चंस करके नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क में दे रही हूँ, जिसमें से एक क्वेश्चन हमने अभी करा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज add 2, add 5, add 1. What is the answer? Come on, fast. Now in this video we learned how to do addition on the abacus tool, and in our next video we are going to learn subtraction on the abacus tool. So for that, stay tuned, and if you liked my video, then share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you.